again it's really hitting the person कि यार ये क्या हो रहा है, right? Why is this happening? Because he still has not processed ego कैसे वर्क करती है. अब ये सब कुछ करते हुए because वो ड्राइव थी, वो हंगर थी, वो डाई तो नहीं करेगी. So you keep doing the progression. Today is about empowering yourself with resilience and well-being. I'm Nitin Dua. I'm an integrated mind, holistic health and career coach. I'm also co-founder of a company called Healthy Tech. I'm trained at Stanford in engineering, plus also researching the brain in medical sciences. Now, in terms of what I focus on now is I work with people on their growth. I work with organizations on their growth, but it all comes down to people's growth. That's the way I see it. And when you feel ready, you can gently begin to open your eyes, open with a bright smile, and say, thank you to yourself for showing up, for doing this together with me. I'm very grateful. Right now, if you can just start with that, why that's my perspective. There's a few more other perspectives. This guy, NVIDIA's founder, Jensen Huang, who's built this company, ये company, equivalent of Apple, Google in the US, NVIDIA, the chips that we are using that's empowering AI today. He's also said resilience matters in success. He's talking about business success. If we take another example from our own country of Virat Kohli, आप सब लोग जानते हैं, where he is, the kind of game he plays, the kind of champion he is. When somebody asked Dravid, what makes Virat rule the game? When you keep going higher and higher, the mental side of the game becomes way more important. That's not my words, that's Dravid's words. And we all know what Dravid has achieved as an individual and what Virat has achieved as a champion. By the way, for me, both Virat and Dravid are incredibly resilient human beings. So now, let me come back to, we experienced a few things. What happened at Stanford is not just कि आप पहुंच गए, ठीक है, मेहनत करके पहुंच गए, आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, right? When you have access to such brilliant people across with you, what can you do with it? It just opens up the mind to a different level of curiosity, a different level of creativity. And for the first time, he saw कि how interdisciplinary functions can work together. अब तक वो engineering करता हुआ आ रहा है. अब यहाँ पर आके brilliant scientists are with him, brilliant medical professionals are with him, brilliant lawyers are with him. So you have intersections at play. अब उस intersection में जब देखा कि engineering को medicine में कैसे apply करते हैं, and how can you understand the brain, how you can understand other disciplines where you can apply your understanding and continue to learn, that's where I saw how the magic started to unfold. So I operate at the intersections of brain, understanding the brain deeply, developing artificial intelligence cognitive systems, जो हम आज देख रहे हैं. Thankfully, I had access to that 20 years ago. And not to just by myself, I thankfully had such an incredible mentor who was an equivalent of a Nobel laureate. वो 80 साल के थे, 2 बजे रात को लैब में मेरे साथ काम करते थे because he had such a drive. And thankfully, I could absorb that drive. But it exposed me to various intersections, looking at it holistically. Psychologically कैसे देख सकते हैं, कैसे devices बना सकते हैं, right? So it really opened up this Pandora of things that are there in the universe. And I was actually giving a talk 2 days ago at another school, and there were astrophysicists with me. So I was invited guest. There were 4 people there. One of them is I think a leading scientist in India in astrophysics. What she said, something I'm quoting from Carl Sagan from 2 days ago: the universe does not come in subjects. To discover its mystery, you have to understand all subjects. We are all explorers, whether we know it or not, for the known and also for the unknown. So the intersection is where I feel that magic begins to unfold. अब ये सब कुछ करते हुए because वो drive थी, वो hunger थी, वो die तो नहीं करेगी, right? And वो attitude build हो गया है. So you keep doing the progression and you keep performing at the next level. Okay, you have understood this thing. How do you apply it to a work context? And frankly, how do you see work itself? What I didn't see earlier is how to look at work beyond you. So, but जो आपने skills बनाई हैं, you can continue to apply and you can continue to apply in a professional context. So he ended up going to wonderful companies, working with wonderful people. So he had this access to work with, again, incredible set of people in professional circles also. So companies like PwC, Twin Health, Scientific Animations, इन सब जगह बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, right? But again, what he did, and at some places he was performing really to the next level. We saw Virat, we saw Dravid. अब कुछ लोग टीम के उसको सचिन ही बोलने लग गए, he's performing at the level of Sachin in the context of the work. Now,
it's great like to be recognized like Sachin. It's very, very awesome to be compared to him. We said we'll not compare, but that's what happened. We're not judging, but that's what happened. But उससे होता क्या है? What happened for this child and for myself, I'm speaking for myself here, it unknowingly built up the ego. Because when you become Sachin, you can also build an ego. अब उसको प्रोसेस कैसे करना है ये भी नहीं पता है, किसी ने सिखाया ही नहीं है, क्योंकि सचिन तो वही बने ही नहीं. अब जब बन गए हो तो फिर ईगो भी आ गई है साथ साथ, राइट? तो you have actually become very self-centered. What happens in ego is you are becoming very, very self-centered. You're not looking out for others. So you have built the agency, you have built the skills. आपके सब कुछ आ गया है, talent है, agency है. You can perform at the next level. People are recognizing you, but you're all about yourself. You're so full of yourself, I, that you choose to ignore what is outside you, right? So that's what ended up happening. तो उसके through क्या हुआ? Can somebody guess what will happen next? Any guesses? Yes. So he failed again. We saw this slide before, right? He failed again, shattering of feelings. इतना अच्छा परफॉर्म करके टीम सचिन बोल रही है, अच्छा काम कर रहे हो. The work you are doing is also actually, by the way, helping people become healthier and happier. आपको जो करना है आप वो कर रहे हो, बट क्यों कर रहे हो वो क्लियर नहीं है. वो अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए है या किसी को सर्व करने के लिए है, वो क्लैरिटी नहीं थी. तो उससे ईगो सामने आ रही है, राइट? सो इट रियली अगेन शैटर्ड द फीलिंग्स कि क्या हो रहा है, राइट? व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? आई हैव गिवन माय बेस्ट. इट शैटर्ड द फीलिंग्स अगेन बिग टाइम कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सचिन बोल रही है टीम, और अच्छा भी कर रहा हूँ, परफॉर्म भी बेटर कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प भी कर रहा हूँ, हेल्थ भी अच्छी इंप्रूव हो रही है लोगों की, जिसलिए करना है वो कर रहा हूँ. अगेन पीपल लाइक जो इलान मस्क के साथ काम करते हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, फिर भी ये हो रहा है. क्या हो रहा है ये, राइट? व्हाई इज दिस हैपनिंग? खाली है ही नहीं, उसके बाद टीम बोल देती है कि यार हो गया तुम्हारा, द एंटायर टीम प्लीज लेट गो, नहीं करना. अगेन इट्स रियली हिटिंग द पर्सन कि यार ये क्या हो रहा है, राइट? व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज ही स्टिल हैज नॉट प्रोसेस्ड ईगो कैसे वर्क करती है, राइट? फिर क्या करा? अब ये हो गया तो, राइट? फिर सपोर्ट चाहिए, राइट? टू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस कैसे करना है, इमोशंस क्या होते हैं, फीलिंग्स क्या होती है, समझते हैं उसको, राइट? तो टेक हेल्प स्टार्टिंग फ्रॉम योर फैमिली, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज वही हैं, आप उनसे शेयर करो अपनी बातें. तो दैट्स व्हाट ही डिड. ही स्टार्टेड शेयरिंग कि यार ये हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, राइट? व्हाट हैज टू बी डन, प्लीज टेल मी. इंपॉर्टेंट थिंग इज अगेन विद द फ्लो ऑफ ग्रेस, थैंकफुली ही वॉज ऑलरेडी डूइंग मेडिटेशन, तो उसको ये दिखने लगा कि कुछ तो गड़बड़ी खुद में हो रही है, राइट? कुछ तो और करना है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, एंड देयर इज ग्रेस, देयर इज सपोर्ट. तो ही कुड शेयर with his parents, with his wife, with his kid also कि यार ये हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, right? Can you help? तो let's figure out क्या होता है, right? Then because not everybody is trained to handle it. आप share करो, that's a wonderful thing, but not everybody is trained to understand what those feelings are, what those emotions are, where they're coming from, what is the root for it, how can we process it. Then somebody has to be found to really help, that who can educate you, who can be with you. उसके लिए he found thankfully a coach that he could help कि यार ये सब चल रहा है माइंड में, ये सब होता है, राइट? दिस इज नॉट हैपनिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम. आपको पहली बार हो रहा है, बट दुनिया में ऐसा होता आ रहा है. इनफैक्ट बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है हो रहा है, आधे से ज़्यादा लोगों को ये हो रखा है, पर उनको पता ही नहीं है, बिकॉज कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, और अगर बात करता है तो बोलता है यार ये क्या हो गया, तो पागल हो गया बंदा. दैट्स द काइंड ऑफ नैरेटिव वी हैव अनफॉर्चुनेटली इन द कंट्री. बट ये तो ऐसा ही है जैसे कि आप मोटे हो जाते हो, तो मोटे हो गए खाना खाते खाते, तो आपको प्रोसेस करना नहीं आया, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे उसको डील करना है. बट लाइक एनीथिंग यू कैन एक्चुअली डील विद इट इफ़ यू लर्न हाउ टू डू इट, इफ़ यू कैन ट्रेन योर सेल्फ. हम मसल बनाते हैं, मैं जिम आता हूँ रोज़, तो मसल एक दिन में नहीं बनती, उसके लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, राइट? सो वी डू ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड ट्रेनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ. सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीकिंग द हेल्प, फाइंडिंग द राइट ट्रेनर्स, फाइंडिंग द राइट मेंटर्स, finding the professional support for it. तो उसमें ये बंदा जो मैं ही हूँ, कुछ साल पहले लो एनर्जी, अनहेल्दी, एंशियस था, ओवर थिंकिंग कर रहा था, और ये सब मतलब वो है बंदा जो ब्रेन को रिसर्च कर रहा था 20 साल पहले, ब्रेन के स्टडी कर रहा था, अंडरस्टैंडिंग न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी पे काम कर रहा था. उसी के साथ ये हो रहा है. तो यार मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है. एनीवन ऑफ यू कैन एक्सपीरियंस दिस.
This is a very normal human condition and a very normal human experience. It's just that we don't know how to understand it. And frankly, somebody who's been trained like me to research it can still fall to it. तो वो आपकी गलती नहीं होती, वो हो रहा होता है. You just have to recognize कि ये हो रहा है, अब उसके लिए क्या करना है. And there are people who are trained to help with that. Now, so this is the transformation that we went. In this process, I'll share a few more tools that helped me go through this transformation, and also many others that I've since then been able to help.